Hello बच्चों. Today we are going to start the fourth lecture of electrostatics. In this lecture we will cover five topics. First is electric field lines, then electric dipole, the field of an electric dipole, physical significance of dipole, and last is torque on a dipole in uniform electric field. Our first topic is electric field lines. Electric field lines are graphical representation of electric field intensity represented by drawing straight or smooth curves around a charge. Tangent at any point gives the direction of electric field intensity so as the direction of force at that point. Field lines are three-dimensional, that is, the electric field lines will be drawn around a charge in space. In figure given below shows some lines of force due to positive and negative charges. In case of positive charge, these line starts from charge and extends up to infinity. But in case of a negative charge, lines of force coming from infinity and ends at it. Next is what are the properties of electric field lines. The first property is electric field lines are continuous curves. That is, breakage is not allowed. They will never terminate anywhere in space and goes up to infinity. Next is, they don't form closed loop, as no electric field line exists inside the charged body. They starts from positive charge and ends in the negative charge. Tangent at any point shows the direction of the electric field intensity at that point as well as force. Next is, they don't intersect each other. If they do so, there will be two directions of force at that point of intersection, which is not possible because a vector can't have two directions at a single point. Next point is, they are always normal to the surface of a conductor. That is, electric field lines never start or end at the surface at some angle other than 90 degree. The next point is, electric field lines exert a lateral pressure. If the charges are same, they exert a lateral pressure on each other, which causes repulsion between the two similar charges as shown in figure. Next is, they contract longitudinally. That is, if charges are opposite, they contract longitudinally. So, due to this contraction of electric field lines, there is attraction occur between two opposite charges, as shown below. The point at which net electric field is zero is called neutral point. This point lies at the center of the line joining the two equal charges because the equal charges exert equal force on each other. But if charges are unequal, the point lies near the smaller charge because the bigger charge will exert greater force on the other. And the last property is, the strength of electric field intensity is represented by the density of electric field lines. As density of lines is more near the charge, therefore the strength is greater, and the density is less far from the charge, therefore the strength is lesser. We have studied in previous lecture that electric field intensity is inversely proportional to the square of the distance between two charges, which is known as inverse square law. Here we will see how it depends on R square by the concept of electric field lines. Electric field intensity at a point is equal to the number of field lines crossing normally a unit area around that point. Therefore, electric field intensity can be written as E is equal to number of field lines divided by area. As you have studied the concept of solid angle in previous class, that is,
solid angle delta omega is equal to delta A by r square. From this formula, we can write the equation of area as delta A is equal to r square into delta omega. By putting this value in previous equation, we get the electric field intensity E is equal to N by r square into delta omega. From equation 1, we can say that electric field intensity is inversely proportional to the square of the distance. As shown in figure, at different values of r, the electric field intensity is different, but the number of field lines is same, passing through different areas containing the points P1, P2 and P3. In this figure, a positive charge is situated at O and electric field lines of that charge is shown. In this figure, the variation of electric field intensity is shown with distance. When the distances are, the electric field intensity is E. If the distance is 2r, the electric field intensity becomes 1 by 4th of E, and moving forward, when the distance is 3r, the intensity becomes 1 by 9th of electric field intensity E. For a complete surface area of a sphere, the solid angle will be 4 pi, and hence the electric field intensity is equal to S upon 4 pi r square, where S is the source strength or number of field lines passing through the area of the sphere. एंगल, इसके साथ हम बड़े यूज्ड टू हैं, लेकिन फिजिक्स में एक नया कॉन्सेप्ट आता है जो कि है 3 डायमेंशनल एंगल, और इसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। तो चलिए देखते हैं सिंपल एंगल, जैसे कि 2 डायमेंशनल एंगल हम कह सकते हैं, उसके साथ सॉलिड एंगल, दैट मीन 3 डायमेंशनल एंगल, इनके बीच डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं यहां पर इस लाइन को कंसीडर करूं, यहां पर देखिए एक लाइन है, ये एक लाइन है। सो अगर ये पूछा जाए, मैं अपने टेबल में रखा हुआ इस कार्ड को देख रहा हूं, तो ये जो लाइन है, ये लाइन मेरे आंखों में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। अगर ये सवाल हो तो ये जवाब बिल्कुल सिंपल है। आप इस लाइन के एक एंड को और दूसरे एंड को उस पॉइंट के साथ जोड़ दे जिस पॉइंट में ये एंगल बना रहा है। अब एक किसी भी लेंथ के रेडियस को कंसीडर करें इसी पॉइंट से और ड्रॉ कर दे एक सर्कल, इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करें। वो सर्कल इस पार्ट को जहां पर काटेगा, ये इस तरह से इसे काटेगा और एक आर्क क्रिएट होगा, और उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस जो होगा वो रेडियस कुछ इतना होगा। यहां पर हमें जो मिल रहा है ये एक प्लेन है, देखिए ये एक प्लेन है। अब अगर एंगल पूछा जाए कि ये वाला एंगल कितना है, तो ये एंगल हम कहते हैं, अगर यहां पर ये जो रेडियस है, जिस रेडियस का सर्कल हमने ड्रॉ किया था, जिसके कारण ये आर्क बना, ये रेडियस अगर आर हो और यहां पर ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ ये अगर एल हो, तो हम कहते हैं एंगल, जो कि 2 डायमेंशनल एंगल है, एंगल इज इक्वल टू जो आर्क लेंथ बना डिवाइडेड बाय जो रेडियस है। देखिए दोनों लेंथ्स हैं, तो ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो एंगल हमें पता है ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, और एसआई सिस्टम में इसे हम मेजर करते हैं, इसे एक नाम दे देते हैं यूनिट को, जबकि ये यूनिट लेस है, फिर भी इसका एक यूनिट के तौर पे हमने नाम दिया है, वो है रेडियन। सो इन शॉर्ट हम इसे रैड लिखते हैं, और ये है रेडियन, इसका पूरा नाम है रेडियन। एसआई सिस्टम में ये एंगल का यूनिट है। सेम लॉजिक से हम सॉलिड एंगल पता करते हैं। सॉलिड एंगल कैसे पता करेंगे, यहां पर देखिए एक ऑब्जेक्ट था, ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है किसी पॉइंट में, तो हमने इस तरह से 2 डायमेंशनल एंगल पता किया था। क्योंकि ये जो प्लेन बन रहा है ये 2 डायमेंशनल है, इसीलिए इस एंगल को 2 डायमेंशनल एंगल कहा जाता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए इस लाइन के बजाय कि ये पूरा का पूरा कार्ड, जो भी कार्ड है, ये मेरे आंखों में कितना एंगल क्रिएट कर रहा है या सबटेंड कर रहा है,
तो यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट्स है, और पेरिफेरी अगर देखें तो ये एक लाइन, ये पेरिफेरी है, ये भी एक लाइन है, ये भी पेरिफेरी है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। तो अगर एंगल 2 डायमेंशनल एंगल की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये तो भाई इतना एंगल सबटेंड कर रहा है। उसी लॉजिक से, पिछले वाले लॉजिक से हम कह सकते हैं ये इतना एंगल सबटेंड कर रहा है। लेकिन पूरा का पूरा कार्ड की बात किया जा रहा है। इसका मतलब हमें ये वाला एंगल जो बनेगा, ये जो लाइन जो एंगल क्रिएट करेगा, वो जो एंगल ये होगा उसे भी कंसीडर करना होगा, और ये वाला लाइन जो एंगल सबटेंड करेगा उसे भी कंसीडर करना होगा। लेकिन सिंपली हम उस तरह से कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि अब देखेंगे हो क्या रहा है। अब यहां पर देखें, इस केस में हमें मिला था एक प्लेन, एक 2 डायमेंशनल सरफेस मिला था। यहां पर हमें सरफेस नहीं मिल रहा है, बल्कि एक वॉल्यूम मिल रहा है, ये वॉल्यूम है। सो हमें यहां पर मिलेगा एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अगर इसे सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें तो ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, जबकि ये 2 डायमेंशनल प्लेन होगा। अब क्या किया जाए, एंगल पता करेंगे तो बड़ा आसान है। कोई भी एक रैंडम रेडियस मान के यहां पर आप एक सर्कल ड्रॉ कर दे तो यहां पर बनेगा आर्क, तो आप ये एंगल पता कर सकते हैं, मान ले θ1। उसी तरह से एक सर्कल कंसीडर करते हुए यहां पर किसी भी रैंडम रेडियस का इस तरह से सर्कल को पास करें तो यहां पर मिलेगा आर्क, और आप बता सकते हैं ये वाला एंगल कितना होगा, θ2। लेकिन पूरा का पूरा अगर कंसीडर करना है इस पूरे सॉलिड ऑब्जेक्ट को, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, पूरा का पूरा कार्ड जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसे अगर कंसीडर करना है तो हम सर्कल कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल इन सारे प्लेन्स को एक साथ कट नहीं कर सकता है, इसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। यहां पर एक सर्कल इसे इंटरसेक्ट कर सकता था, 2 लाइंस को, या फिर एक प्लेन में एक सर्कल हो सकता है, लेकिन यहां पर तो बहुत सारे प्लेन्स है। ये एक प्लेन हो गया, यहां पर ये एक प्लेन हो गया, इस तरह से पीछे भी एक प्लेन है, और उस साइड में, इस साइड में एक प्लेन है। 4 प्लेन्स है, तो 4 प्लेन को एक सर्कल काट नहीं सकता है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो हमें क्या करना होगा, सर्कल अगर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, या फिर कहें 2 डायमेंशनल फिगर है, तो उसी का एनालॉगस फिगर 3 डायमेंशन में क्या होगा, स्फीयर होगा। तो एक स्फीयर कंसीडर कर ले, कोई भी रैंडम रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर कर ले। अब ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है। अगर ये स्फीयर होगा तो ये पूरे सॉलिड बॉडी को काटेगा। तो सॉलिड बॉडी को पूरा जब ये काटेगा तो ये यहां से ऐसे काटेगा, यहां भी काटेगा ये ऐसे, और ऐसे, और फिर ऐसे। तो अब हमें यहां पर क्या मिला, हमें मिला एक सरफेस, कर्व्ड सरफेस एक मिला। ये एक लाइन नहीं है बल्कि कर्व्ड सरफेस है। सेम इसी तरह का लॉजिक अगर हम यूज करते हैं तो हम यहां पर इस सॉलिड एंगल को पता कर सकते हैं। तो यहां पर ये अगर एंगल हम कहते हैं, ये अगर एंगल है तो हम यहां पर कहेंगे कि ये जो है ये सॉलिड एंगल है। और इसे हम मेजर कैसे करेंगे, इसे मेजर करने का जो तरीका है, यहां पर देखिए पिछले केस की तरह ही है, मिलता जुलता है। यहां पर अगर रेडियस r है, याद रखें इस केस में भी कि सॉलिड एंगल भी यूनिटलेस होगा। जैसे एंगल यूनिटलेस होता है, लेकिन फिर भी हम उसे एक नाम दे देते हैं, रेडियन, एसआई सिस्टम में। उसी तरह से सॉलिड एंगल ये भी यूनिटलेस होगा। पिछले केस में देखें क्या मिला था हमें एक आर्क मिला था, तो हमने आर्क के लेंथ को कंसीडर किया था। यहां पर देखिए हमें क्या मिल रहा, हमें यहां पर एक सरफेस मिल रहा। तो सरफेस का तो लेंथ नहीं होता है, सरफेस का क्या होता है, सरफेस का एरिया होता है। तो इस केस में जब हम कहेंगे सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल यहां पर जो होगा ये होगा, इसका जो एरिया है, तो यहां पर इसका जो एरिया है इसे हमने ए नाम दे दिया। तो हम कहेंगे कि ये होगा ए डिवाइडेड बाय, आप सोचे क्या होगा ये, क्या हम यहां आर लिखे, इसे यूनिट लेस होना है, और एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर। इसका जो यूनिट होता है, एसआई सिस्टम में बात करें तो स्क्वायर मीटर होता है। यहां पर आर अगर लिखते हैं जो कि रेडियस है, इसका यूनिट होगा मीटर, तो यहां मीटर बच जाएगा। इसे यूनिट लेस होना है तो क्या किया जाए, रेडियस का स्क्वायर। और इसका जो नाम है, ये तो यूनिटलेस हो गया, फिर भी हम इसे एक नाम एसोसिएट करते हैं, और वो नाम है स्टेरेडियन। पूरा नाम अगर लिखे तो ये होता है स्टेरेडियन। इसे स्क्वायर रेडियन या फिर रेडियन स्क्वायर्ड भी कहा जाता है। किस लॉजिक से कहा जाता है, अगर मान ले एक लेंथ है,
तो इसका यूनिट को हम मीटर कहते हैं। लेकिन अगर एक सरफेस हो, मान ले इस तरह का एक रेक्टेंगल हो, इसका एक लेंथ होगा जिसका यूनिट मीटर होगा, इसका एक ब्रेड्थ होगा, इसका भी यूनिट मीटर होगा, तो इस पूरा का पूरा जो सरफेस एरिया होता है उसका यूनिट को हम मीटर इंटू मीटर, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर्ड कहते हैं। उसी लॉजिक से यहां पर एक एंगल बनेगा, यहां पर एक एंगल बना, रेडियन बना, यहां भी एक रेडियन बनेगा, सो रेडियन स्क्वायर्ड। इसी लॉजिक से हम इसे रेडियन स्क्वायर्ड भी कहते हैं। तो ये था बड़ा बेसिक सा वीडियो सॉलिड एंगल पे। आगे आपको और भी सॉलिड एंगल्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Next topic is electric dipole. A system of two equal and opposite point charges separated by a small distance is known as electric dipole. The middle point of the line joining the centers of the two charges is known as center of the dipole, denoted by O in the figure. Net charge of the electric dipole is equal to 0, but that doesn't mean that the electric field is equal to 0. Here are some examples of electric dipole. Atoms or molecules of ammonia, water, alcohol, carbon dioxide, and hydrochloric acid, etc. Moving to our next topic, which is electric dipole moment associated with the previous one. Electric dipole moment of an electric dipole is the product of magnitude of either charge and the distance between the two charges. It measures the strength of the electric dipole and is a vector quantity. The direction of electric dipole moment is from negative to positive charge. The formula of electric dipole moment is equal to Q into 2A, where Q is the magnitude of the charge and 2A is the distance between the two charges. The unit of the electric dipole moment is coulomb meter and the dimension is m0l1 t1 a1. Our next topic is the field of an electric dipole. Field of an electric dipole is the space around an electric dipole in which the electric effect of it can be experienced. As I have mentioned in previous topic that net charge of a dipole is equal to 0, but that doesn't mean the electric field is 0. So that the intensity of field at any point can be obtained by using Coulomb's law and principle of superposition. To get the magnitude and direction of the intensity of the field at any point, we will put a unit positive charge at that point. After that, we will calculate the resultant intensity due to couple of charges at the same point. Under this topic, we will study two cases. First one is the electric field intensity at a point on axial line of an electric dipole, and second is the electric field intensity at a point on equatorial line of an electric dipole. Our first case is to find out the electric field intensity on axial line of an electric dipole. In this case, let us consider AB is an electric dipole, O is the center of the dipole, Q is the magnitude of the charge of the dipole, 2A is the length of the dipole, I cap is the unit vector along positive x-axis, and we have to find out the electric field intensity at point P situated at the axis of the dipole. At point P, there held a unit positive charge to get the intensity of the dipole, and the resultant intensity is considered to be E. The separation between O and P is x,
and the electric field intensity due to minus q charge is towards it and is represented by E minus q, and that is due to plus q charge at point P is E plus q, and the direction is outward. Here in the figure we can see that the electric field intensity at point P due to plus q is greater than the electric field intensity at point P due to minus q charge, because plus q charge is near to the point P in comparison to the minus q charge. So the intensity of plus q charge is greater. Now according to Coulomb's law, we can write the electric field intensity at point P due to minus q charge is E minus q is equal to 1 by 4 pi epsilon naught minus q upon x plus a square into I cap. Here I cap is the direction of electric field intensity at point P. And also the system is held in free space. Similarly, we can write the equation for electric field intensity at P due to plus q charge, which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught plus q upon x minus a whole square I cap. Hence, net electric field at point P by using superposition principle can be written as E is equal to E minus q plus E plus q. Substituting the values and transposing, we get E is equal to q by 4 pi epsilon naught 1 by x minus a whole square minus 1 by x plus a whole square I cap. By solving this equation, we get E is equal to 4qax upon 4 pi epsilon naught x square minus a square whole square I cap. Assuming that the point P at which we have to find out the electric field intensity due to dipole is very far from the dipole, therefore x is much greater than a, and hence we can neglect a square in the denominator. So the expression becomes E is equal to 4qa I cap upon 4 pi epsilon naught x cube. Since we know that the dipole moment is given by P is equal to 2a into q into I cap, thus the expression of electric field at point P becomes E is equal to 2p by 4 pi epsilon naught x cube. This is the expression for electric field intensity at a point on the axis of the electric dipole. Our next case is to find out an electric field intensity at a point on equatorial line of electric dipole. In this case, the point at which the electric field intensity is to be obtained is located on the perpendicular bisector of the line joining the two charges. For this, let us consider an electric dipole AB having center at O, and the magnitude of the charge of the dipole is Q, and the length of the dipole is 2a. We have to find out the electric field intensity at point P at a distance y from the center O. Here, the angle PAB is theta, which is equal to PBA. In figure, the electric field intensity due to negative Q charge is towards the charge and is E minus Q, and the electric field intensity due to plus Q charge is outwards and E plus Q. The resultant of these two electric fields is E as shown in figure. We can write the magnitude of electric field at point P due to minus Q charge, which is 1 by 4 pi epsilon naught Q by y square plus a square. Here y square plus a square is AP, and we can obtain the value of AP using Pythagoras theorem in triangle OAP. There will be two components of E minus Q.
First one will be the along x-axis and second will be along y-axis. In the similar way, we can get the magnitude of electric field intensity at P due to plus Q charge, which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by y square plus a square. E plus Q will also have two components. One is along plus y direction and other will be along minus x direction. The two components of E plus Q and E minus Q is shown in figure. We can get the resultant electric field at point P by using superposition principle. Therefore, E is equal to E minus Q plus E plus Q cos theta minus I cap. Here, minus I cap is the unit vector along minus x-axis. By substituting the values of E minus Q and E plus Q, we get resultant intensity is equal to 2qa upon 4 pi epsilon naught 1 by y square plus a square cos theta minus I cap. The vertical components of the two electric fields are equal and opposite in direction, therefore they will cancel each other. Therefore, the resultant electric field will be 2qa upon 4 pi epsilon naught 1 by y square plus a square cos theta minus I cap. From the figure, we can find out the value of cos theta in triangle OAP. OA upon AP will be equal to cos theta and which is equal to a by under root y square plus a square. The value of AP can be obtained by using Pythagoras theorem. Now, by putting the value of cos theta in previous equation, we get the final expression of electric field intensity is equal to 2qa minus I cap upon 4 pi epsilon naught y square plus a square to the power 3 by 2. In case the point P lies far away from the electric dipole, therefore y is much greater than a and hence we can neglect a square in the denominator. So the expression of electric field becomes E is equal to 2qa minus I cap upon 4 pi epsilon naught y cube. And we also know that the electric dipole moment is given by 2a into q I cap, which is equal to P. By putting the value of electric dipole moment in previous equation, we get E is equal to minus P upon 4 pi epsilon naught y cube. This is the electric field intensity in vector form at a point on equatorial line of an electric dipole. Our next topic is physical significance of electric dipole. Physical significance of electric dipole is to predict the polarity of a molecule. There are two kinds of molecule according to the polarity. First is non-polar molecules and second is polar molecules. Non-polar molecules are those in which negative charges lie at the same place as that of positive charge. Therefore, their dipole moment is zero and the molecule is considered as non-polar. When electric field is applied to them, their positive and negative charge get displaced to give induced dipole moment. Some examples of non-polar molecules are CO2 and CH4. However, they develop a dipole moment when an electric field is applied. Second is polar molecules. In some molecules, the center of negative and positive charges do not coincide. Therefore, they exist permanent electric dipole moment, but in random direction. So, their net dipole moment is zero. When they are exposed to the electric field, the
dipole align in the same direction and they give the net dipole moment. This process is known as polarization. For example, water molecule. Therefore, electric dipole moment has great physical significance in electrical properties. Moving to our next topic, which is torque on an electric dipole in uniform electric field. For this, let us consider an electric dipole AB of length 2a and have magnitude of the charge q situated in an electric field of electric field intensity E. The axis of the dipole is at theta angle from E. There will be two forces acting on the poles of the dipole due to their charges. First one is F plus Q acting on positive Q charge, which is equal to plus QE, and next is F minus Q, which is equal to minus QE. As the forces are equal, unlike, and parallel, acting at different points, therefore they form a couple which rotates the dipole in the clockwise direction, as shown in figure. To find the arm of the couple, we can see in the triangle ABC, sin theta is equal to BC by AB, or sin theta is equal to BC by 2A, or we can write BC is equal to 2A sin theta. Now we know that torque is equal to force into arm of the couple. Therefore, that by putting the value of magnitude of the force and the value of arm of the couple, we get the magnitude of torque is equal to QE into 2A sin theta. As we know that magnitude of electric dipole moment is given by Q into 2A, so by putting the value in the last equation, we get the magnitude of torque is equal to PE sin theta. Or in vector form, we can write the torque as tau is equal to P cross E. This is the equation of torque acting on an electric dipole placed in an electric field. Homework. You have to learn the properties of electric field lines and practice all the derivations of this lecture. Find out the ratio of electric field intensity at a point on the axis of the dipole to the electric field intensity at a point on the equatorial line. Also, study the special cases of torque on an electric dipole in a uniform electric field. Thank you.